So today we're going to study about the spinal cord, the general features of spinal cord. Good morning, everyone. So spinal cord, spinal cord is the caudal extension of the CNS outside the foramen magnum. It's a continuation of the brain stem outside the foramen magnum. Brain stems includes midbrain, pons, medulla, and after emerging out from the foramen magnum at the upper border of first atlas vertebrae. So from the upper border of the first atlas vertebrae down till the coccyx, it is the vertebral canal. But in adults, the spinal cord extends from the upper border of C1 vertebrae and down till the lower border of L1 vertebrae. However, this spinal cord is at the time of birth, it is filling the entire vertebral column, but at the time of birth, because of the differential body growth, the body growth exceeds the growth of this length of the spinal cord. So the spinal cord terminates at a higher level, and that's around lower border of L3 at the time of birth. Then around 6 months to 1 year of life, this reaches its definitive position, that is the lower border of L1. So by the end of first year of life, spinal cord has attained its definitive position. Okay, I hope everybody has joined. There are still some participants who I think are still to join. They're showing, okay, 137 students are there. So I believe you have this some idea of spinal cord. Now, because you know that it's a content of vertebral canal, and spinal cord is being extension of CNS, and as you know, the brain is lined by the three meninges, covered by three meninges. The three meninges continue to cover the spinal cord in the vertebral canal. Here, what you're seeing is a vertebral transverse view or superior view of a vertebrae, showing the vertebral canal. Here you're seeing that it's the spinal cord with an anterior median longitudinal fission, and posteriorly you have a septum or a sulcus on the surface, and the gray matter inside and the white matter on outside. Now the red color bound covering is the pia mater. Pia mater, as you know, is a thin and vascular layer of the among the three meninges, and it is tethered or so closely applied to the brain matter that it goes into the sulci. Here also you have sulci, posterolateral sulci, posteromedial sulci, anterolateral sulci. You have around 5 sulci, longitudinal sulci in the spinal cord, and this pia mater goes inside the posteromedial sulci in the spinal cord. Pia mater, as you know, in the brain, I told you, was having two layers, epipia and pia glia. Pia glia was, the the layer which was forming the perivascular sheaths, and epiglia was one which was embedding the blood vessels on its surface. So this is pia mater. Then outside to pia mater is a space filled with CSF, and that's called subarachnoid space. And outside this space, it's lined by arachnoid matter. Okay, an arachnoid was a thin translucent membrane, and this space, is not like a free space. It is actually filled up by
arachnoid trabeculae, making like a spongy appearance. It has trabeculae. Then outside to arachnoid matter is the space called subdural space, and outside to subdural space will be the dura mater, the spinal dura mater. But the dura mater in the cranium is having, two layers, them. The outer layer was the endosteal layer, which is forming the endosteal layer, lining the cranial wall from inside, and the other was the meningeal layer. The gap between the two layers of the dura was forming the dural venous sinuses, and the folds of meningeal layer of the dura in the cranium was forming the various dural folds. There were four major folds of dura mater, falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, and the diaphragma cilia. Now, when this dura mater, when it reaches to the foramen magnum, the outer layer, the endosteal layer of the dura mater, that merges with the periosteum of the skull. So it's only, remember, it's only the meningeal or the dura mater that continues in the vertebral canal. So you only one layer of dura mater in the vertebral canal, and outside to the dura, this space is called epidural space. Now the epidural space means the space between the meningeal layer of the dura and an osteal layer of the vertebral canal. This space is filled up with adipose connective tissue, as well as you have internal vertebral venous plexus, blood vessels in the epidural space. And this space is used for epidural anesthesia as well as analgesia. I told you in sciatica, this epidural analgesia was given in the sacral hiatus. Anyways, so this is the location of the spinal cord in the vertebral canal. The particulars about the measurements about the spinal cord is length. First of all, length of the spinal cord is nearly to that of, equal to that of the length of femur and thoracic duct, and that's around 18 inches. 18 inches is same as 45 centimeters. It's said to be the length of spinal cord in adult males. Females may around 42 to 43 centimeter is the length of spinal cord in females. Now the weight of the spinal cord is actually very less. It's around 30 grams. Now this weight is compared, if you compare to the weight of brain, that is around 1500 grams. ठीक है, यानी कि 1.5 kg. ठीक है, तो ये उससे नहीं कंफ्यूज होना कि 50 grams is the weight of brain in CSF. ठीक है, यहाँ पे वेट एक नॉर्मल वेट की बात हो रही है, like in the air, like without in suspended in the media. So the weight of the brain is 1.5 kg, and weight of spinal cord, imagine compared to that 1.5 kg, it is only 30 grams. Okay. Then, as I told you, that at birth it reaches at the lower border of L3 vertebrae due to differential or the more rapid growth of the body wall and the vertebral canal, which exceeds in length. So you find that the spinal cord recedes, or rather it ascends to a higher vertebral level. So you'll find that around 6 to 12 months
this spinal cord reaches to the lower border of L1 vertebrae. That is its definitive position, even in adults. So C1 upper border और इसकी upper limit कहाँ से? How, from where you like differentiate between medulla oblongata and the spinal cord is the upper border of C1. यानी कि if it's asked like which structure passes through foramen magnum, is it medulla or is it spinal cord? So it's medulla oblongata that emerges from the foramen magnum, and as it emerges, soon after its name gets changed. Now it's called spinal cord. Okay, that's the point of differentiation of the nomenclature. Otherwise, there's hardly much difference in lower medulla and upper spinal cord. Then the lower limit is L1 lower border. Okay. So now the meninges which were covering was rather extending from the prolongations of the meninges from the cranium outside in the vertebral canal. You know, biomatter as it sticks or lines the spinal cord, so it continues lining the spinal cord, that you'll say that biomatter will also terminate at the lower border of L1 covering the conus medullaris. The lower end of the spinal cord is conus medullaris, but below to that it will still continue as a thread or a filament continuation of this biomatter from the lower border of L1, that is conus medullaris, straight down into the vertebral canal up till the upper border, you can say the base of the coccyx. It is attached to the base of the coccyx within the vertebral canal, and that's called filum terminale, right? And with the help of what advantage you get from filum terminale is that maintains the vertical stability of the spinal cord in the vertebral canal. So even if a person hangs upside down, the position of spinal cord should not change. Got it? Then there are other modifications of the different meningeal layers. Let's talk about this biomatter. We are covering the meninges portion here. Then biomatter, one of them continuation of the biomatter from L1 to the tip of to the base of the coccyx is filum terminale, and the length of filum terminale is 20 centimeters. 20 centimeters thick. But look here, the dura and arachnoid, the outer two layers, the dura and arachnoid, they are actually separated from the biomatter because of the subarachnoid space. So these meninges will not terminate at L1 lower border, rather they will continue down up till the S2 lower border. Got it? S2 tak it will continue down and will terminate at the lower border of L2, S2. So conus medullaris L1 lower border and dura arachnoid at S2 lower border. So between L1 to S2, it is a subarachnoid pool, right? Subarachnoid pool or the lumbar cistern. Call it lumbar cistern, right? Content of the lumbar cistern is cauda equina and filum terminale. But filum terminale, is from L1 to the base of coccyx. That means filum terminale is from L1 to lower border to S2. This much portion of filum terminale will be enclosed in the dural sheath and bathed by CSF. That is called filum terminale interna, and that's around 15 centimeters.
portion of the phylum terminal outside dura from S2 to coccyx is called phylum terminal externa, and that is 5 centimeters. Got it? So this way, can you remind me something was similar about the length of ureter? What's the length of ureter? Anybody? Length of ureter will be same as? No. Yeah, 20, it's 25. You know, 25 is the better word. We can length, you can approximately 25 centimeters, and that is similar. Let's talk about what other structures you know which are 25 centimeters in length. Yes, stomach, esophagus, duodenum. Yes, the three structures in line GIT mein: esophagus, stomach, duodenum, ureter. ठीक, they are all 25 centimeters. ठीक, अब बात कर रहे हैं यूरेटर की भी वही सिचुएशन है. You know, part of the ureter lies within the abdominal cavity and part of the ureter lies within the pelvic cavity. So how will you break up this length of ureter? The abdominal portion of ureter and the pelvic portion of ureter. What's the breakup of this length of ureter? You'll see, I think I'm reminding you because similar was the situation to learn up about the length of phylum terminal. And same is the situation here. Yes, Shejal, it is better way to learn the length of ureter in inches. So you'll learn it better way that the length of ureter is 10 inches. 10 inches is same as 25 centimeters. So you can remember that it is 50-50. I mean, 5 inches of ureter lies within the abdominal cavity and 5 inches of the ureter lies within the pelvic cavity. Got it? So you remember this way. And same in case of phylum terminal. Now phylum terminal, the length is 20 centimeters. Take a little smaller than the length of the ureter. But, you know, major portion of the phylum terminal lies within the subarachnoid space, within the dural lumbar system. So that's around 15 centimeter. And the part of the phylum terminal outside the lumbar system, like from S2 to coccyx, is only 5 centimeters. ठीक, तो इस तरह से चीजों को याद रखने की कोशिश करना चाहिए. Then another modification of phylum, pia mater is you seeing that this is the anterior portion of the vertebrae or the anterior portion of the spinal cord. Postally, you have a median longitudinal sulcus on the surface and it's a septum gone inside. Okay, that's pia mater invaginating inside. But anteriorly, you find is a anterior median longitudinal fissure in a spinal cord, right? So this pia mater anteriorly, the two ends approximated and like with a median longitudinal raphe, it approximates the two ends. It closes the two ends by a zipper-like fashion, and you can say down to up. It's closing this anterior longitudinal fissure, and this anterior longitudinal fissure contains a major structure, and that is called anterior spinal artery. Anterior spinal artery is lodged in the anterior longitudinal fissure. So the two ends, or you can say the anterior portion of this spinal cord of the white matter, they approximated with the help of linea splendens. This linea splendens is more prominent in the lower portion of the spinal cord. Got it? So linea splendens, I'll show you somewhere in the diagram further sometime. So linea splendens is another modification of pia mater. Then
I told you the vertical stability of the spinal cord within the vertebral canal is maintained by the phylum terminal. Now, what about the transverse stability? Like it is bathed in the subarachnoid space, and yes, you correct, Akash. It's ligamentum denticulatum. But people have this, doing different sort of movements like transverse or lateral tilting, or even doing somersaulting or different activities. In that case, the spinal cord can rub along the transverse surface, the lateral surface of the vertebral canal. So to maintain its transverse stability, you have ligamentum denticulatum, and that again is a modification of pyometer. So yes, Shrija Singh, it's 21 in number, you remember this. So this, pyometer you seeing this, both the sides transversely, it extends a tooth-like process within the subarachnoid space, which indents this arachnoid andura and is attached to the body of vertebrae on the inner surface. Body nahi ye kya hai, pedicles, or the you can say the lateral surface of the vertebral canal on the inside. Thick in between the two adjacent nerve roots. So tell me, like spinal cord resides between how many vertebrae? It's covered by how many vertebrae? Spinal cord is covered by how many vertebrae? How many vertebrae enclose the spinal cord? 7 cervical vertebrae. Then you have 12 thoracic. Yes, Shejal, it's 20. You're correct. So 20 होते हैं. 7 cervical, 12 thoracic. Then you have first lumbar. तो किस पे होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक जाता है. ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 7 सर्वाइकल और 12 और L1, तो 12 और 7 और L1, that makes around 20. So 20 vertebrae में तो ये ligamentum denticulatum attach होगा. Got it? But the number, as you said it's 21. So remember that the first tooth or the first ligamentum denticulatum is attached to the either side of foramen magnum. ठीक है? अनुज कुमार कहाँ पहुंच गए? सेक्रल रीजन, लंबर रीजन से कोई मतलब नहीं है. यहाँ बात क्या हो रही है इसको समझो पहले. ठीक है? So the spinal cord is lined by 20, it's covered by 20 upper 20 vertebrae, and in each vertebrae on adjacent side on the inner surface it's attached with the, on either side between the two subsequent nerve roots, it's joined, it's attached to the either side of the vertebral canal in each vertebral segment. But the first one is attached to the two sides of the foramen magnum. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि the first one को अगर include करें तो that makes it 21 in number. Okay? तो ये तो थे modifications of pyometer, वो भी बता दिया. Okay? One thing you remember about the different vertebrae, the spinous process was most dipping down, in case of which vertebrae, which vertebrae of which region, cervical, lumbar, thoracic, sacral, the spinous process is
not transverse, rather it is dipping downwards and posteriorly. Yes, Ankita, Akash, Yashika. It is dipping down in case of thoracic. Okay? In thoracic region, the spine is more dipping down, such like, when you count the vertebral level on the back by palpating the spinous process on the back, you will find actually the tip of the spine on which you are pointing is actually overlying the numerically lower vertebrae, or you can say the numerically, vertebrae down below. So that means they are dipping so much down. I taught you about the thoracic vertebrae. Now let's see about the contents of vertebral canal. This is a vertebral canal in a cut section. You're seeing that this is the anterior and this is the anterior longitudinal fissure. Although they have not shown the fissure, it's actually a fissure lodging the anterior vertebral artery, on anterior spinal artery. This is the post. Now on the surface you find is posterior median sulcus, and this is posterior median septum. Then the pia mater, this you seeing is arachnoid matter, and this green color is the subarachnoid space, which is filled with CSF, and this space is trabeculated, like arachnoid matter, a lot of trabeculations. Then outside to that will be dura mater. And as I have been telling that spinal nerves emerges by a ventral root and a dorsal root. The two roots, in fact, remember the dorsal root was having a dorsal root ganglion, a sensory ganglion. So the two, after dorsal root ganglion and the dorsal root and the ventral root join together to form a spinal nerve. Now this ganglion, can you see it was asked somewhere in a MCQ form in a question in an exam, that what is actually the location of DRG? Dorsal root ganglion, you can see if you place another vertebrae above to this, you will find that this gets hidden because DRG is not actually a content of vertebral canal. DRG is not a content of vertebral canal. So remember that DRG is a content of intervertebral foramen. This space is intervertebral foramen. You have a superior vertebral notch and an inferior vertebral notch. When you place the two vertebrae one above another, you form is this foramen formed, that is intervertebral foramen. So DRG is actually a content of intervertebral foramen. This is the vertebral canal, and this portion is intervertebral foramen. So DRG is a content of intervertebral foramen. Now see that this spinal nerve, this is the actual exact literal meaning of a nerve. Spinal nerve is this. Then as it emerges of the intervertebral foramen, spinal nerve soon divides into a bigger or larger anterior division and smaller posterior ramus. You call this ramus, anterior ramus and the posterior ramus. Okay? Anterior one is a much bigger ramus. Then that means जो हम नाम लेते हैं radial nerve, ulnar nerve, femoral nerve, sciatic nerve, actually देखा जाए तो they are all derived from the anterior primary ramus, except few nerves on the back, like greater occipital nerve and C1, or there are some nerves in the back which are derived from the posterior ramus. Otherwise, the majority of the nerves, they're actually derived from anterior primary ramus. Even the brachial plexus, lumbar plexus, sacral plexus, cervical plexus, these are all plexuses formed by the anterior ramus.
तो इसका मतलब ये जो नर्व्स लेते हैं हम, नामल नर्व, मीडियन नर्व, सेक्रल नर्व, शियाटिक नर्व, फिमोरल नर्व, ये सब मिसनोमर है, मिसनोमर है। नर्व का लिटरल मीनिंग ये होता है, ये nerve is actually which emerges out from the intervertebral foramen. उसके बाद वो सब डिवाइड हो जाता है, हम बोल देते हैं नर्व, but actually it's an derivation from the anterior primary ramus. Got it? अच्छा, अभी हमने लास्ट लेक्चर, आई थिंक मंडे को, आई वाज टीचिंग यू अबाउट द sympathetic chain. Can you see now that sympathetic chain is a beaded chain lying on either sides of the vertebral bodies of the vertebrae, and these sympathetic chain are attached with two rootlets to the anterior primary rami. Among these two rootlets, the distal one is the white rami communicantis, and the proximal is the gray rami communicantis. So you're seeing is this lateral horn in the spinal cord. From here, the preganglionic fibers, either sympathetic or even parasympathetic, they emerge out through the anterior horn, through the anterior root, and then to the spinal nerve, and they continue in this anterior ramus, and through the distal rootlet, remember, through the distal rootlet, that is white rami communicantis, it enters into this sympathetic ganglion where it's released. Now the postganglionic parasympathetic fibers will emerge out to the proximal root, and that is gray rami communicantis, because they are mostly unmyelinated fibers. तो ये यहाँ से पोस्ट प्रॉक्सिमल लिम्ब से आएंगे, फिर आगे जाएंगे, एक तरह से इट्स फॉर्मिंग अ लूप. लुक हियर, दिस फाइबर्स गोज लाइक दिस, यहाँ से इंटर करे और फिर वापस इधर से निकल के फिर इधर गए. ठीक. अच्छा, सर्वाइकल रीजन में वाइट रमाई कम्युनिकेंटिस नहीं होगा. लंबर रीजन में, लोअर लंबर रीजन में वाइट रमाई कम्युनिकेंटिस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? उसमें लेटरल हॉर्न नहीं होता, उसमें प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, ना तो सिंपैथेटिक ना तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं होते. ठीक है, यू नो दैट. ओके, अब इसी डायग्राम में हम इस पे ध्यान देते हैं. तो ये pyometer है, the pyometer on lateral surface, you see this is, we were talking before, this is the ligamentum denticulatum. This ligamental, and because यहाँ पे क्या है, ये seeing this yellow color thing, this is actually the body of vertebrae. You can say the lateral bony surface of the vertebrae. So that means this has already emerged out of the vertebral canal. This is the bony surface. So it is attached to the lateral bony surfaces on within the vertebral canal. ठीक. तो ये इस तरह से हर और ये हर रूटलेट्स के बिटवीन, लाइक अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट की रूट्स के बिटवीन, it is attached to the either side of the vertebrae in each vertebral level. Then what you're seeing here, this is epidural space. I told you the space outside the dura is epidural space. This is the meningeal layer of the dura. Remember, endosteal layer of dura नहीं होती है इस vertebral canal में, single layer होती है. Then this is the bony surface of the vertebral canal, and between the two layers, meninges and endosteal layer, this is the epidural space filled with adipose connective tissue. Adipose connective tissue. ठीक है. एपिड्यूरल को एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस भी लिखते हैं. ठीक. And what else you are seeing is the internal vertebral venous plexus. There is internal vertebral venous plexus surrounding the spinal cord within the vertebral canal in the epidural space. Okay. Okay, done. Now this is the diagram showing the lateral view of the spine of the two adjacent vertebrae. And can you tell me, these vertebrae, they have been shown here, they are from which portion of the body? Cervical, thoracic, lumbar, sacral.
these vertebrae you're seeing, yes, exactly, Akash, it is thoracic, or I think सबको समझ में आ जाना चाहिए easily, thoracic है, and the reason is, but obviously you can see the two coastal facets on the edges, on the sides of the body of vertebrae. These are the costal facets. Upper one is a larger facet, lower one is a smaller facet, and the head of the rib articulates with both the facets. The head of the rib, if let's say this is the fourth thoracic vertebrae, the fourth rib will articulate here to the upper larger facet, and it will also articulate with the lower smaller facet on the T3 vertebrae, with the intervertebral disc in between, and to which it will attach with the help of interarticular ligament. So this is the main important feature which will help, which is helping you identify that it is a thoracic vertebrae because of the costal facets. And also on the anterolateral surface of the transverse process, you find the costal facets. Now these are for the formation of, क्या है ये, क्या जॉइंट बनाते हैं, costotransverse joints. The tubercle on the rib articulates with the transverse process to form the costotransverse joints. Anyways, now these are the joints, between intervertebral joints. As I told you, between two adjacent vertebrae, there are actually three joints. This joint you are seeing is this between the body of vertebrae. It's the fibrous interarticular disc place. This intervertebral disc is actually a fibrocartilage, and the joint is, what type of joint is this? This is a secondary cartilaginous joint. See? But posteriorly, you are seeing this is the superior articular process, and this is the inferior articular process. So the inferior articular process of the upper vertebrae articulates with the superior articular process of the lower vertebrae, and they are paired joints. So, and this one is a plain synovial joint. See? So it makes, Akash ये गलत उल्टा लिख दिया है. Actually it's two synovial joints and one secondary cartilaginous joints. There are total three joints between two adjacent vertebrae. See? Now you'll see that this intervertebral foramen is being formed by two notches. So it's not a true foramen, because this notch is called the inferior vertebral notch, and the shallow notch here is superior vertebral notch. Superior vertebral notch is a shallow notch, and inferior vertebral notch is a deep notch. Together, when placed above one another, then they form intervertebral foramen. And can you see that this dorsal root ganglion emerging here, seen here? So remember, it's not a content of vertebral canal, rather it's a content of intervertebral foramen. And this is how spinal nerve emerges out. Let's say if this is T3, this is T4. This spinal nerve will be third thoracic nerve or fourth thoracic nerve. If this is T3, this is T4. This spinal nerve will be T3 or T4. This Kirti Singh, you're correct. This is T3. This is the third thoracic nerve. So many times I have been repeating that you should remember by now that thoracic and below, the spinal nerves emerge from below their corresponding vertebral level. So this is the third spinal nerve if this is the T3 vertebrae. Okay, now another view. These are the two successive vertebrae with intervertebral discs, and these are the costal facets. No doubt these are also the thoracic vertebrae
with the articular processes on the transverse process as well, articular surfaces. Then look here on the contents of the vertebral canal. So this is the spine from inside to outside. Let's see, this is spinal cord covered by pia mater, and pia mater you seeing is going within, like inside the anterior longitudinal fissure. Then it is covered, a red color one is the pia mater. Then outside this green color one is the arachnoid matter. So between arachnoid and pia, this space is subarachnoid space. And outside to pia is dura matter, and between arachnoid and dura is subdural space. And outside dura and vertebral canal, this space is called epidural space. Okay? And the contents of epidural space, I told you, mainly it's this internal vertebral venous plexus. This one will be the anterior internal vertebral plexus, and there you find is posterior internal vertebral venous plexus. These are contents of epidural space, and also the space is being filled by extradural or epidural fat. Okay? This ligament, many times I have been telling you about this ligament also, which is like a sellotape right from atlas down to the sacrum. This ligament is a longitudinal ligament, and it, it is binding all the vertebrae together, running posteriorly on the surface of body of vertebrae, or you can say running anteriorly in the vertebral canal. This is the posterior longitudinal ligament. Similarly, there will be a ligament here, right anterior to the body of all the vertebrae, and this ligament will be anterior longitudinal ligament. Okay. Now, because this has to be understood, because this creates some logic, like in case of doing anesthesia in orthopedic surgeries, and like determining the cause of paralysis and all, you have to have this idea that each spinal nerve, I've been repeating that each spinal nerve emerges out from the internal vertebral venous plexus in the cervical region from above the vertebral level, and in the thoracic, lumbar and sacrum from below the thoracic, below the corresponding vertebral level. That means nerves तो अपनी ही जगह से निकलेंगी, right? और fetus जब था तो spinal cord was filling the entire vertebral column. Now the differential growth by the time of birth तो L3 तक रह गया spinal cord, थोड़ा और बढ़ गया, एक साल के बाद क्या हो रहा है कि spinal cord reached the lower border of L1. लेकिन नर्व्स तो अपने ही इंटरवर्टेबल फोरामेन से निकलेंगे. सो व्हाट विल हैपन कि स्पाइनल कॉर्ड की जो अपर स्पाइनल नर्व्स हैं वो तो नियरली ट्रांसवर्सली निकलेंगी, but the lower ones will now have an oblique course. In fact, the lowermost, let's say sacral, तो वो L1 पे टर्मिनेट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड. तो जो sacral segments हैं, those nerves will have an oblique course. Rather, the sacral ones will have nearly a vertical course in the form of chorda equina, and will descend down to emerge out from their corresponding intervertebral foramen. ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखने के क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो क्या है, स्पाइनल सेगमेंट से मतलब समझ में आ गया. स्पाइनल सेगमेंट उसे कहते हैं जिस पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट्स कितने होंगे. स्पाइनल सेगमेंट्स एक्चुअली विल बी सेम एज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. कितनी होती हैं? 31 नर्व्स होती हैं. वर्टिब्रे कितने होते हैं? 33 होते हैं. तो हमारी स्पाइनल सेगमेंट्स विल बी 31 सेगमेंट्स, और 31 स्पाइनल सेगमेंट्स होंगी क्योंकि 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं. 8, 12, 5, 5 and 1, राइट. सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉसिक्स 31 सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल सेगमेंट्स. और ये 31 सेगमेंट्स किसके? देयर लॉज्ड विद इन द अपर 20 वर्टिब्रे. 20 वर्टिब्रे कैसे हैं? 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक एंड 1 lumbar. So 20 vertebrae will accommodate 31 segments. ठीक, तो इस पे ध्यान से समझ लो
कि cervical region, you know, the cervical spine lodges the 8 cervical spinal segments. ठीक, तो इस केस में in the cervical region each nerve, spinal nerves in the cervical region will have nearly a transverse course within the vertebral canal to emerge out transversely through the intervertebral foramen rather from upper border of the similar vertebral level. I mean from above to the corresponding vertebral levels. तो इस वजह से ये हो गया 7 vertebrae will lodge 8 segments in the cervical region. Then upper 6 thoracic vertebrae will lodge 8 segments of the spinal cord, 8 thoracic segments of the spinal cord, T1 to T8, right? यानी कि T8 spinal segment will be at the lower border of T6 vertebrae. So upper 6 thoracic vertebrae will lodge the upper 8 thoracic segments. Then T7 to T9, that means 3 vertebrae will lodge 4 segments, T9 to T12. यानी कि all thoracic nerves have emerged out. I mean, all thoracic segments are under the cover of T9. When T1 to T9, you can say T1 to T9 lodges the entire thoracic segment of the spinal cord. ठीक है, तो T1 to T9 will lodge T1 to T12. ठीक, अब रह गया है 10 and 11 thoracic vertebrae will lodge all the sacral, all the lumbar vertebrae. 2 vertebrae, 10 and 11 will lodge 5 lumbar segments. ठीक है, तो 10 and 11 के लेवल पे अगर कोई इंजरी होती है, ठीक है, 10 and 11 thoracic vertebrae है, इस पे अगर कोई इंजरी होगी तो क्या होगा कि L1 to L5 के लेवल पे जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, L1 and L5 के लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो कोई 10 और 11 thoracic vertebral लेवल पे इंजरी कैसे हो सकती है? मे बी अ डायरेक्ट ब्लो, जैसे कि किसी ने हॉकी मार दी या बैट उठा के मार दिया पीठ पे और वो लगा जाके पीछे T10 और T11 vertebral लेवल पे, डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो गया. तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर हिट हुआ है T10 और T11 पे, तो उसकी फिमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, जेनाइटोफिमोरल नर्व, इलियोइंग्वानल, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक, रिमेंबर, लेटरल ऑफ थाई, ये सब लंबर प्लेक्सस की हैं ब्रांचेस, ये सब डैमेज होंगी. ठीक, फिर हम बात करें T12 टू L1. L1 पे तो खत्म हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये जो लास्ट 2 वर्टिब्रे हैं, दे विल इनक्लोज 6 सेगमेंट्स. दैट मींस all the sacral and the coccygeal segment will be lodged within T12 to L1. 6 segments. In fact, L1 के level पे spinal cord becomes tapering, and that is called conus medullaris. Conus is actually lodging the lower sacral and coccygeal vertebrae. The 2 thoracic, two vertebrae, T12 and L1 will lodge the lower 6 segments of the spinal cord. अब इस लेवल पे भी इंजरी अगर हो तो कैसे हो सकती है इंजरी? इस लेवल पे इंजरी भी भाई डायरेक्ट ट्रॉमा, किसी ने हिट कर दिया पीठ पे कोई किसी चीज से, बैट या हॉकी या कुछ भी, तो इस लेवल पे अगर इंजरी आएगी तो भाई शियाटिक नर्व तो डैमेज होने के चांसेस हैं, राइट? हालांकि शियाटिक नर्व 10, 11 पे भी और 12 पे भी है, बिकॉज शियाटिक नर्व L4 से स्टार्ट होती है, S2 S3 तक जाती है. शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है. फिर ग्रेटर एंड लेसर ग्लूटियल, सॉरी, क्या नाम है, सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं. ऑब्टुरेट नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, राइट? ये सारी सैक्रल प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं, ये सब डैमेज हो सकती है. ठीक, तो ये चीज समझ में आई, इसको याद कर लेना अच्छे से कि 20 वर्टिब्रे
upper 20 vertebrae of the vertebral canal will lodge the entire spinal cord, and that includes 31 spinal segments. ठीक, किस किस लेवल पे कौन से आते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। ठीक, सर्वाइकल में पूरे के पूरे 8, ठीक, अपर थोरैसिक में 8, ठीक है, अपर 6 थोरैसिक में 8 segments, then 3 thoracic, 7, उसके बाद 3 vertebrae will lodge 4 segments, then 2 vertebrae will lodge all, यानी कि 10 and 11 all the lumbar, and last 2 vertebrae 12 and L1 will lodge all the sacral and coccygeal vertebrae। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत क्लिनिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसको समझते हैं, डायग्राम में देखते हैं। This is this length of spinal cord. You can see around 45 centimeters right from the foramen magnum. It is continuing emerging out and it is reaching to the here, this point, lower border of L1. ठीक, okay, then as you know, the spinal nerves, you can see in the cervical region, they are emerging out from above to their corresponding vertebral level. So this is T8 emerging above T1. From thoracic onwards, they're emerging out from below to their vertebral levels. And as I have been telling you, spinal segments अब ऊपर रह जाएंगे और vertebral canal यानी कि intervertebral foramen, they will be down below, right? So nerves will now start taking in oblique course in the upper thoracic level, in the upper and thoracic level, and the lower thoracic level में the spinal nerves within the vertebral canal will have an oblique course down, and then they will emerge out. Now in the lower, and you can say कि lumbar and sacral nerves, lower lumbar and sacral nerves, ये यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि lumbar segments were lying opposite to T10 and T11 vertebrae. ठीक है, 10 and 11 यहाँ पे lumbar nerves हैं, ये सब निकल के नीचे जाएंगे, फिर अपने अपने corresponding vertebral foramen से निकलेंगे। Sacral वाला कहाँ पे पाया जा रहा था? Sacral segments, they were all opposite to T12 and L1. तो T12 and L1 यहाँ पे conus medullaris है, all the sacral and coccygeal spinal segment lies here. So the nerve roots, यहाँ से निकलेंगे, सीधे जाएंगे नीचे और फिर अपने अपने sacral foramina से you can see S1, S2, S3, S4, S5, coccygeal, they're emerging out like this. So ये पूरा nearly vertical continuation of the nerve roots. ठीक, अच्छा, अब एक और बहुत important बात वो ये है कि एक प्रोटोकॉल है, वो बहुत याद कर लेना है कि स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कैनाल का कंटेंट स्पाइनल नर्व नहीं है, बताया था, बहुत अच्छे से याद कराया था। वर्टिब्रल कैनाल के कंटेंट में क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड द वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व रूट्स, राइट? Ventral and dorsal nerve roots lie within the vertebral canal, and the two nerves join to form a spinal nerve within the intervertebral foramen. ये बात बहुत अच्छे याद कर लेना, यही फंडा है, एक प्रोटोकॉल है, चाहे वो कोई भी स्पाइनल नर्व। लेट्स से कि S2 की बात करें तो S2 स्पाइनल नर्व तो भाई कहाँ पे होगी? अपोजिट टू T12 और L1 लेवल पे होगी, ठीक है, T12 लेवल पे होगी S2। ऑल द सेक्रल एंड फर्स्ट कॉक्सिजल लाई अपोजिट टू T12 एंड L1, तो T12 के लेवल पे सेक्रल नर्व होगी S2 स्पाइनल नर्व। लेकिन जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है उसको याद रखना कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं? डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स होते हैं। दोनों नर्व रूट ज्वाइन करके स्पाइनल नर्व बनाते हैं, और स्पाइनल नर्व कब बनाते हैं? जब द टू नर्व रूट्स एग्जिट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये है कि द कोडा इक्वाना जो है, दैट इज नॉट, याद रखना, दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि स्पाइनल नर्व बनी ही नहीं। S2 की स्पाइनल जो डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स हैं वो सीधे नीचे आएंगे। अब S2 और S3 के बीच जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है
वहां पे दोनों फ्यूज होंगे और फिर S2 स्पाइनल नर्व बाहर आएगी. Got it? So it's the extension of nerve roots, not the nerves. So cauda equina is the extension of nerve roots, not the spinal nerves. क्योंकि nerve roots अपने ही intervertebral foramen में fuse करके spinal nerve बनाती हैं. ठीक. अब देखो, एक स्पाइनल सेगमेंट में कितनी नर्व्स होती हैं, कितने नर्व रूट्स होते हैं? डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स. डॉर्सल वन इज अ सेंसरी रूट एंड वेंट्रल वन इज अ मोटर रूट. बट दे आर पेयर्ड, तो यानी 4 नर्व रूट्स हो गए. ईच स्पाइनल सेगमेंट हैज 4 नर्व रूट्स. गॉट इट? अब एक बात ये बताओ, जैसे मैंने कहा जब तक स्पाइनल कॉर्ड है तब तक कॉर्डा इक्विना का नाम नहीं आएगा. ठीक है? That means L1 nerve is not a part of cauda equina. ठीक. L1 निकल जाने के बाद कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं जो रह जाती हैं? बिलो L1 कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं जो रह जाती हैं? That will make 4 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. टोटल कितनी हो गई? 10. So there are 10 spinal nerves which emerge from below L1 level. ठीक है, क्योंकि L1 तक तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो L1 के बिलो जितनी नर्व्स निकलेंगी उनके नर्व रूट्स क्या बनाते हैं? कॉर्डा इक्विना. तो कॉर्डा इक्विना अच्छे से समझ लिया है. सो इन शॉर्ट, हाउ मेनी नर्व रूट्स यू विल फाइंड एट L2 vertebral level? कोई बता देगा? Yes, very good. Vasundhara Oli, 40 nerve roots. So you will find 40 nerve roots at L2 vertebral level. लेकिन एक बात और बताएं, as this cauda equina will keep descending down, 4 nerve roots will keep exiting. यानी कि right and left, dorsal and ventral will join to form spinal nerves in the corresponding intervertebral level. तो अब हम L3 लेवल पे अगर हम बात करेंगे, L3 में that will be 40 minus 4, that will be 26. 26 नर्व रूट्स कहां मिलेंगी? L3 वर्टिब्रल लेवल पे. हाँ एग्जैक्टली 36 मिलेंगी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम L4 की बात करेंगे तो 8 नर्व रूट्स हैव ऑलरेडी बीन एग्जिटेड, तो अब हो जाएंगी 32. ठीक है. तो इस तरह से एक और चीज समझ में आ रही है कि बाय द टाइम दिस कॉर्डा इक्विना keeps descending down, the thickness of the nerve roots will also become less. It will become tapering. And इन्हीं सब वजह से the appearance of this is called a horsetail appearance. Got it? And horsetail is called cauda equina. बहुत अच्छे समझ में आ गई बात. अब याद रखना कि जो कॉर्डा इक्विना है वो स्पाइनल नर्व्स नहीं है, वो नर्व रूट्स हैं. लोअर 10 स्पाइनल नर्व्स की नर्व रूट्स हैं, चूंकि नर्व बनती है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में. दोनों वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व रूट्स वर्टिब्रल कैनाल के कंटेंट हैं. जब ये वर्टिब्रल कैनाल से इंटर अपने ही करस्पॉन्डिंग जहां से उसको डिस्टाइंड है एक स्पाइनल नर्व को निकलना, वहां पे जाके दोनों नर्व रूट्स जुड़ेंगे और फिर बना लेंगे स्पाइनल नर्व दैट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. तो चाहे वो सेक्रल हो या लोअर लंबर हो, ये सब, या कॉक्सीजियल हो, ये सब नर्व रूट्स हैं जो डिसेंड करेंगे और अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में नर्व बना के फिर बाहर निकलते हैं. ठीक है. तो लेवल की बात बता रहे हैं तो ये कृष्ण कीर्ति को समझ ही नहीं आया अभी तक. लेवल की क्या बात हो रही है? L1 लोअर बॉर्डर से cos6 तक कॉर्डा इक्विना ही तो है. L1 लोअर बॉर्डर से cos6 तक इट इज ऑल कॉर्डा इक्विना एंड दैट इज आल्सो द लेंथ ऑफ फाइलम टर्मिनेल. ठीक. अब इस पे ध्यान देते हैं. Look here now, this diagram is also very important. इस पे ध्यान देते हैं. इसमें देखते हैं ये है cervical segments. Then you have the red, yellow is the cervical, red is the thoracic, green is the lumbar and blue is the sacral and brown is the coccygeal. तो पहली चीज तो ये देखते हैं, let's talk about spinal cord के shape के ऊपर.
spinal cord is actually cylindrical structure. Solid तो नहीं कह सकते because the spinal cord within its center has a cavity called central canal. Central canal of the spinal cord is continuation of the ventricles of the brain. That also is filled with CSF. हम बात कर रहे हैं इसकी. Now look here, ये जो spinal cord है total around 18 inches है, right from the upper border of C1 to the lower border of L1 it is 45 centimeter or 18 inches. Now in this length, throughout this length of the spinal cord till L1 lower border, यहाँ से यहाँ तक, it has two dilatations, or you can say rather dilatations, thickenings. There are two thickenings of the spinal cord. दो थिकनिंग है. यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें एक बल्ज है. दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एक बल्ज फिर मिलेगा यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड लंबर इनलार्जमेंट. अब ये जो इनलार्जमेंट है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट सिलिंड्रिकल कंटिन्यूअस इन इट्स लेंथ, रादर इट हैज टू बल्जिंग्स. In cervical and lumbar region, the spinal cord is enlarged or thickened. Fusiform thickening. अब ये थिकनिंग हुई क्यों है? सीधी सी बात ये है कि जो एक तरह से डेवलपमेंटली अगर आप देखो तो एक ट्रंक है. ह्यूमन बॉडी इज अ ट्रंक ऑन टू विच देयर आर अपेंडेजेस. द अपर एंड लोअर लिम्स आर एक्चुअली लाइक अपेंडेजेस अटैच्ड टू अ ट्रंक. तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिलिंड्रिकल होती है अगर अपर एंड लोअर लिम्स ना होते. क्योंकि अपर एंड लोअर लिम्स आर एक्स्ट्रा बर्डन टू दीज रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? सो in the region of brachial plexus and in the region of lumbosacral plexus, these are the regions which supply nerves to the upper limb and the lower limbs. ठीक है? Because यहाँ पे अब एक्स्ट्रा बर्डन है पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ अपर लिम्ब, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब. So you'll have more amount of neurons to accommodate in these regions, right? So there's like swelling or thickening in this region. That's called cervical enlargement. अब इसको कैसे याद रखा जाए कि सेगमेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो जैसे मैंने बताया, यहां से ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है. कहां से बनता है? C5 to T1. You know that? So cervical brachial plexus forms by C5 to T1. लेकिन मैंने एक बार पढ़ाया, जब किसी ने पढ़ाया होगा ब्रेकियल प्लेक्सस, तो बताया होगा देयर आर चांसेस ऑफ प्रीफिक्स्ड एंड पोस्टफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस आल्सो, of which prefixed brachial plexus is more common. ठीक है? तो प्रीफिक्स्ड इमेजिन करके हम C4 को इंक्लूड कर लेते हैं. So अब ये याद रखना कि that cervical enlargement of the spinal cord is C4 to T1. ठीक, अब ये याद रहेगा. प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस ज्यादा कॉमन है, तो उस वजह से हम C4 को इंक्लूड कर लेते हैं. तो C4 to T1 is the region of cervical enlargement of spinal cord. अब इस रीजन में जब चूंकि स्वेलिंग है, ये फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग है, तो समवेयर इन द मिडिल इट विल हैव द मैक्सिमम डायमीटर. तो याद रखना, जो मैक्सिमम डायमीटर है सर्वाइकल इनलार्जमेंट का, वो एट C6 सर्वाइकल सेगमेंट. 6 सर्वाइकल सेगमेंट पे सबसे ज्यादा वाइडर होता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड दैट इज अराउंड 38 मिलीमीटर्स. ठीक, अब हम बात करते हैं लंबर इनलार्जमेंट. इसको कैसे याद करा जाए? इसके लिए ये याद रखना कि लंबर के लिए, लंबर इनलार्जमेंट के लिए ये याद रखना कि देखो, लंबर लोअर लिम्स में जो नर्व्स हैं वो क्या हैं? फिमोरल नर्व है, ऑब्टुरेटर नर्व है. फिमोरल, ऑब्टुरेटर. फिमोरल इज फ्रंट ऑफ थाई, ऑब्टुरेटर इज मिडल साइड ऑफ थाई. दोनों के रूट नंबर सेम है, L2, L3, L4. ठीक, L2, L3, L4 dorsal division is femoral, L2, L3, L4 is ventral division is obturator. तो यानी L2 से सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और फिर नीचे तक जाएंगे तो किसकी बात आ जाएगी? शियाटिक नर्व. शियाटिक नर्व इंक्लूड्स टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल. तो शियाटिक नर्व कहां से स्टार्ट होती है? L4, L5, S1, S2, S3 in case of tibial nerve. L4, L5, S1, S2 dorsal division in case of common peroneal nerve. तो यानी
सियाटिक नर्व का लोअर जो सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है S3 तक आ रहा है, ठीक है। तो यू इंक्लूड कि हम थाई में 3 कंपार्टमेंट नादा को, फ्रंट ऑफ थाई और मिडल साइड इज L2 L3 L4 femoral and obturator, और पीछे शियाटिक, बैक ऑफ थाई इज शियाटिक, और फिर लोअर लिम्ब पूरा, चाहे वो एंड फ्रंट ऑफ लेग, बैक ऑफ लेग, लेटरल लेग और डॉर्सम ऑफ प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ सोल, व्हाटएवर, इट्स कंटीन्यूअस थ्रू आउट बाय शियाटिक नर्व की ब्रांचेस हैं। तो सेगमेंट याद रखने के लिए L2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो L2 से स्टार्ट होगा, S3 तक जाएगा, S3 तक शियाटिक है। तो ये याद रखना दैट लंबर इनलार्जमेंट इज फ्रॉम L2 टू S3, ठीक। इन 3 नर्व्स को याद रखना तो अपने आप याद हो जाएगा, femoral, obturator and sciatic. So the segments are L2 to S3 that forms the lumbar swelling. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग है तो मैक्सिमम डायमीटर कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो बीच में कहाँ आएगा, S1। लंबर स्वेलिंग में, लंबर इनलार्जमेंट में, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ लंबर इनलार्जमेंट इज एट S1 स्पाइनल सेगमेंट, और उसकी थिकनिंग कितनी है, 35 मिलीमीटर, ठीक। अब ये बता दो कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी थिकनिंग ज्यादा थिक होती है, सर्वाइकल थिकनिंग या इनलार्जमेंट या लंबर इनलार्जमेंट, विच इज मोर वाइडर थिकनिंग, सर्वाइकल इनलार्जमेंट और लंबर इनलार्जमेंट? अरे भाई कैसे गलती कर देते हो उसामा, दीपा, वसुंधरा, जब डायमीटर 38 ज्यादा है, 35 ज्यादा है, साफ साफ लिखा हुआ है C6 पे इट्स 38 मिलीमीटर, सो दैट मीन्स सर्वाइकल enlargement is more wider than the lumbar enlargement. ये चीज भी देखो, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज बन जाते हैं जो हम कवर करा दे रहे, ठीक है। तो दो यानी कि 2 स्वेलिंग है स्पाइनल कॉर्ड में, सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में। सर्वाइकल रीजन में है C4 to T1, लंबर रीजन में है L2 to S3, ठीक है। द वाइडर थिकनिंग इज द सर्वाइकल थिकनिंग, जिसकी मैक्सिमम डायमीटर आती है C6 पे 38 मिलीमीटर। लंबर स्वेलिंग का मैक्सिमम डायमीटर है S1 पे एंड दैट इज 35 मिलीमीटर। गॉट इट? तो दैट वाज अबाउट द स्वेलिंग्स। और ये स्वेलिंग बनी क्यों है? टू अकोमोडेट द न्यूरॉन सप्लाइंग द अपर एंड लोअर लिम्स। ओके, अब देखते हैं ये जो इमर्जिंग नर्व रूट्स हैं। देखो सर्वाइकल येलो कलर में, ईच स्पाइनल नर्व यू कैन सी इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम अबव द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल लेवल्स, ठीक। However, C8 is emerging from below C7. Vasundhara, I have seen it. You have written cervical, I know it. Okay, good. So Vasundhara, I mean, you know, जितने भी cervical है, that's correct. अब हम बात कर रहे हैं, इस पे ध्यान देते हैं। Now C8 and below, each spinal nerve you can see here in the diagram. It's all given in your books also, that these spinal nerves, they are emerging from below their vertebral levels, ठीक। अब as you go down, can you see in the vertebral canal, this portion is the vertebral canal, पहले सर्वाइकल रीजन में they were running a transverse course because उनके segments, उन्हीं के पास segment, spinal segment and vertebral level are nearly the same. But thoracic, lower thoracic onwards, you can see the nerves have started dipping down to emerge out of the vertebral levels. So they are going actually in an oblique course. And lumbar and sacral region में, rather the sacral region में, they have nearly the vertical course, right? एक बात और बता दें कि ये जो कुछ भी यहां दिख रहा है ये स्पाइनल नर्व नहीं है, ये नर्व रूट्स हैं। क्योंकि स्पाइनल नर्व कहां बन रहे हैं? वर्टिब्रल कैनाल्स के अंदर, यहां पे स्पाइनल नर्व्स बनेंगे, उसके अंदर स्पाइनल नर्व रूट्स हैं और इसके बाहर जो निकलनी ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे भी देखो तुम, ये है L1, राइट? L1 passes below L1 vertebrae. So L1 has been left out, then the remaining nerve roots, they have encircled from L2 onwards till first coccygeus. All of them are together bundled up to form chordae corona, right?
तो इस वजह से ये 40 नर्व रूट्स होते हैं L2 टू फर्स्ट टू द कॉक्सिजियल, और ये पेयर्ड होते हैं बोथ द साइड्स, तुमको पता ही है, उसके वजह से 40 नर्व रूट्स होते हैं कॉर्ड बना में। Upper extension is called medulla oblongata, that you know, and the lower portion is called conus medullaris of the spinal cord. Then ligamentum denticulatum, जैसे मैंने बताया था, they were like midway between the adjacent nerve roots, यानी ऊपर की तरफ, जैसे थर्ड थोरैसिक सेगमेंट है, वर्टिब्रल लेवल है, तो ऊपर भी और नीचे T2 ऊपर T4 नीचे, बीच में बिटवीन द टू नर्व रूट्स लिगामेंट डेंटिकुलाटम अटैच कर देता है स्पाइनल सेगमेंट को टू द एडजेसेंट साइड्स। स्पाइनल सेगमेंट को नहीं करेगा, स्पाइनल सेगमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका वर्टिब्रल सेगमेंट से मतलब है, ठीक है। वर्टिब्रे कितने हैं? 20, अपर 20 वर्टिब्रे प्लस 1 इन द फोरामेन मैग्नम। ओके, तो ये वर्टिब्रल लेवल हो गए। ये फिर से तुमने देख लिया है कि अपर थोरैसिक सेगमेंट्स में T1 टू T8 है, देन T7 टू T9 will include segments 9 to 12, vertebrae T10 to 11 will include all the lumbar, and vertebrae T12 and L1 will include sacral, all the sacral and coccygeal vertebrae, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ ये तो तुमको बहुत अच्छे से बता ही दिया है मैंने। फाइलम टर्मिनल, कैन यू सी? Phylum terminal is this. Phylum terminal, see the tip of the conus medullaris से continuous down and reaching to the tip of the base of the coccyx, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई हो तुमको अच्छे से। अगर पूछ ले जाए L4 लेवल पे कितने नर्व रूट्स होंगे, आई थिंक यू आर एबल टू कैलकुलेट इट नाउ, ओके। अब जनरल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। एक कट सेक्शन में, you know, spinal cord and cut section is appears like this. It's a general prototype. Let's say the thoracic segment, ठीक है। So let's see on the outside first. On the out, यानी कि exterior view में क्या क्या features होंगे। As I said, anteriorly you find is a deep fissure, and that is called anterior median fissure, ठीक है। This is an anterior median fissure, and this is lodging this artery, the anterior spinal artery, ठीक। Then the splitting of the two anterior funiculars is approximated by this pia mater enclosing on all the sides. This pia mater bridges by a raphe hair anteriorly, and that is called linea splendens. Then posteriorly you have the sulcus. If you posteriorly see a spinal cord along the length, longitudinally it has a sulcus, and that's called posterior median sulcus. So posteriorly you have a sulcus, anteriorly you have a fissure. याद रखना, ठीक। Then that sulcus, through that sulcus, that pia mater reaches inside, and it's called posterior median septum. So posteriorly you have a septum. Apart from that, posterolaterally, if you'll see where this posterior horn, the gray matter, reaches to the periphery, there also you have a sulcus, and that is called posterolateral sulcus. Now this posterolateral sulcus lodges the posterior spinal arteries. So because they are paired, anterior spinal arteries unpaired, posterior spinal artery are paired. So posterior spinal artery will be lodged here in the posterolateral sulcus, both the sides, ठीक है। But important point ये अकेली है anterior spinal artery, but ये मेजॉरिटी यानी एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई, एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई कौन करेगा? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये दो हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर 2 इन नंबर, पेयर्ड, but they will supply only posterior 1/3 of the spinal cord, ठीक। तो अब देखो ये जो एंटीरियर हॉर्न है, that is the motor horn, anterior horn, from where the efferent nerve roots emerge out, and that forms a sulcus here, and this sulcus is anterolateral sulcus. So to the anterolateral sulcus you will find is attachment of anterior nerve roots.
To the posterolateral sulcus you will find attachment of posterior nerve roots. यानी कि देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में you will find 5 sulcus, 2 anterolateral sulcus, 2 posterolateral sulcus, and a posterior median sulcus. Okay. Then talking about the gray matter lies within and the white matter lies outside in the spinal cord. And to the center you find is a canal, which is a continuation of the vertebral system, ventricular system of the brain. And the central canal is lined by, again, ciliated brush border epithelium. ये भी पूछा गया था पीसीटी में. Ciliated brush border epithelium called ependyma. Okay. Then this gray matter has, you know, a dorsal horn. Dorsal horn is nearly cylindrical, okay, in length, and dorsal horn receives the first order sensory neurons, okay, and first order sensory neurons यहाँ terminate करते हैं dorsal horn में, and second order sensory neurons from this posterior horn will ascend up in the form of ascending projection neurons to the diencephalon. Okay. Then you have this bulged anterior horn, the effector or the motor horn. यहाँ से efferent lower motor neurons will emerge out from the anterolateral sulcus. ठीक है, तो ये wider होता है. यहाँ पे look here, this gray matter has most of the cells are Golgi type 1, and Golgi type 1 का criteria था that they have a long axon and many small dendrites. So most of the neurons, even in the ascending and in the descending tracts, they are lower motor neuron की बात करें, चाहे यहाँ पे second order sensory neurons की बात करें, they are all Golgi type 1. But here in between, you find the internuncial neurons. Internuncial neurons are mostly Golgi type 2. And Golgi type 2 में क्या feature था? That axons are very small axon and lots of dendrites and axons. The axon is not enough to travel outside the gray matter. So remember that Golgi type 2 neurons are localized or confined to the gray matter. So the Golgi type 2 neurons will be found here in the gray matter, connecting like adjacent neurons. So they're interlinking neurons, so internuncial neurons कहते हैं. Gray lateral horn भी मिलेगा तुम्हें, ये lateral horn मिलेगा in case of sympathetic outflow from T1 to L2. And you will find this lateral horn in S2, S3, S4 as well for parasympathetic preganglionic neurons. But this gray matter of the two sides is communicating to the adjacent side with the help of, you know, dorsal gray commissure and the ventral gray commissure. So commissure word याद रखना अभी से. Commissural actually nerve fibers के ही नाम है. If the nerve fibers cross from left to the right side, or they communicate to the neurons or the centers from left to the right or right to the left, इनको कहते हैं, such fibers are called commissural fibers. So these are post dorsal and ventral commissural fibers. Projection fibers means up and down, the fibers running up and down, vertically running fibers are projection fibers. Association fibers कौन से होते हैं? जो एक ही साइड में ipsilateral, एक ही साइड में different neurons से communicate करते हैं, they are association neurons like internuncial neurons. Okay, that was about the gray matter. And the bed cells, remember the large neurons, the large pyramidal neurons, which are actually found in the fifth layer of the gray matter of the cerebrum. Cerebral cortex में जो होता है fifth layer में होते हैं largest bed cell, but the same pyramidal cells you will find here also into the anterior horn, because they are the cell bodies of the lower motor neurons. Then talking about the white matter, you know, is made up of the axons, the myelinated. In the PNS are called nerves, and in the CNS they're called tracts, they're called lemniscus, they're called funiculus, they have different names. So the area of the white matter behind the dorsal horn is called
posterior funiculus. This is called posterior funiculus. This much portion is posterior funiculus. The area of the white matter lateral to the dorsal and ventral horn, this area is called lateral funiculus. And the area of the white matter anterior to the anterior horn is called anterior funiculus. So you have two funiculus, three funiculus, posterior funiculus, lateral funiculus and anterior funiculus. टर्मिनोलॉजी समझते रहो, अभी न्यूरल एनाटॉमी बहुत ज्यादा जाएगी, तो अभी से टर्मिनोलॉजी क्लियर हो. अब एक बात और है कि व्हाइट फाइबर्स भी लेफ्ट टू राइट कम्युनिकेट करते हैं, एंड दिस एरिया एंटीरियर टू द ग्रे मैटर इज कॉल्ड व्हाइट कमिशर. ठीक है, तो यहां पे व्हाइट फाइबर्स लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं, सो दे आर व्हाइट कमिशर. इसी तरह से ग्रे मैटर में भी यू हैव लेफ्ट एंड राइट, एंड इट इज कॉल्ड डॉर्सल ग्रे कमिशर, वेंट्रल ग्रे कमिशर, एंड द व्हाइट कमिशर इज एंटीरियरली. Because posterior funiculus on the two sides are separated by the posterior median septum. ठीक, तो ये भी तुमको देख लिया है. इसमें कुछ खास नहीं है इस डायग्राम में, ये हम तुमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे अबाउट द ग्रे मैटर, न्यूक्लियर इन द ग्रे मैटर. विल नॉट टॉक अबाउट दिस. सिर्फ इसमें जो डिफरेंसेस हैं, लाइक यू नो दिस इज अ कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट डिफरेंट सेगमेंट्स. लेट्स से दिस इज द सर्वाइकल कट सेक्शन, this is the upper thoracic cut section. Sorry, now this one is the third cervical, upper cervical segment है. This is sixth cervical segment. अब sixth cervical segment से याद आया, this is from the cervical enlargement, rather the widest segment. अगर कुछ पूछा जाए स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे ज्यादा या थिकनिंग कहाँ पे होती है, C6 पे होती है, 38 मिलीमीटर इसकी ब्रेथ है. So this is the lower cervical from the cervical enlargement portion, इसलिए तुम्हें कट सेक्शन में सबसे वाइड यहाँ पे दिख रहा है. Then this is the upper thoracic. From the upper thoracic segments where you find this cut section is nearly circular. सिक्स thoracic segment है. ये सेकेंड लंबर हो गया. सेकेंड लंबर का मतलब है कि यहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकलेगी वो कॉर्डा इक्वाना का पार्ट होगी. तो दिस इज सेकेंड लंबर सेगमेंट. बट रिमेंबर कि सेकेंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड L1 पे खत्म हो रहा है, लेकिन S2 पे क्या खत्म होता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो. बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान से रखने याद रखने वाली है. स्पाइनल कॉर्ड तो L1 पे, दैट्स अ वर्टिब्रल लेवल, लेकिन स्पाइनल सेगमेंट कौन सा है जहां पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो खत्म हो रहा है, दैट इज L2. तो यानी कि T1 to L2, तो यानी कि सेकेंड लंबर में लेटरल हॉर्न मिलेगा. And this one is the third sacral segment. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के बारे में देखा जाए कि पूछा जाता है that the transverse section of spinal cord is oval in shape in case of lower cervical segments. बाकी सब में thoracic, lumbar, sacral में सर्कुलर है. ठीक है, लेकिन सर्कुलर कंप्लीटली सर्कुलर है, मोर ऑफ सर्कुलर, मोस्ट सर्कुलर यू फाइंड इन द लोअर thoracic segments. अच्छा, शेप जो है सिलिंड्रिकल होता है. बल्बस किस में होगा, दो ही जगह होगा बल्बस, इन द लोअर सर्वाइकल एंड इन द लोअर लंबर रीजन यू विल फाइंड इज बल्बर. और लेटरल हॉर्न देखा जाए तो सर्वाइकल में एब्सेंट होगा, सीधी सी बात है. देयर इज नो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, सो यू डोंट फाइंड लेटरल हॉर्न इन द सर्वाइकल सेगमेंट्स. थोरैसिक रीजन में भाई होगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो के लिए. ठीक है, लेटरल हॉर्न. फिर लंबर रीजन में ओनली इन 1 and 2, L1 L2 में होगा लेटरल हॉर्न, बाकी में नहीं होगा लेटरल हॉर्न. सेक्रल में क्या होगा, यू विल फाइंड लेटरल हॉर्न इन S2, S3, S4 सेगमेंट्स. ठीक, बाकी यहाँ पे देखें एंटीरियर हॉर्न, ये लेटरल हॉर्न की बात हो गई. एंटीरियर हॉर्न इसकी बात करते हैं. ये एंटीरियर हॉर्न के देखो शेप काफी बदलते रहते हैं. ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न तो हर जगह सिलिंड्रिकल था, लेकिन पोस्टीरियर हॉर्न बल्बस कहां पे हो जाता है, लोअर लंबर एंड सेक्रल रीजन में थिकर हो जाता है पोस्टीरियर हॉर्न. हम अब एंटीरियर हॉर्न की बात करते हैं. तो एंटीरियर हॉर्न नैरो होता है. यू कैन सी अपर 3 सर्वाइकल सेगमेंट्स. C4 में ब्रॉड हो जाता है, C4 to C8 सेगमेंट्स टू सप्लाई दी अपर लिम्स. ये देखो ये ब्रॉड हो गया एंटीरियर हॉर्न. ठीक, फिर सिलेंडर हो जाएगा T2 to T12 सेगमेंट्स, एंड T2 to 12 तक
इट विल बी सिलेंड्रिकल, एंड T1 में ब्रॉड होगा, क्योंकि T1 जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट में बनाता है। फिर लंबर में क्या है, इट्स बल्बस टू सप्लाई द लोअर लिम्स, एंटीरियर हॉर्न इज लंबर एंड सेक्रम में दोनों में दिख रहा है कि बल्बस होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है लंबर स्वेलिंग होती है, लंबर एंड सेक्रल प्लेक्सस बनता है, इस वजह से, क्योंकि इफरेंट्स निकलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, इसलिए